welcome dear students. Welcome to mechanics lecture number 18. In this lectures, we will be solving problems with Newton laws, that is free body diagrams. So I'm Dr. Parvez Ahmed. तो आइए चलते हैं आज की लेक्चर की तरफ. जिस तरह के आप लोगों को पता है कि फोर्सेस जो है ये हमारे पास वेक्टर्स क्वांटिटीज है, मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए. न्यूटन सेकंड लॉ, ये भी आपको पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास बराबर है, दैट इज समेशन ऑफ फोर्सेस और द नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए. Summation of force that is equal to vector sum of all the forces on the mass m. So we need vector additions to add forces, and the second law, forces add according to the rules of the vector additions as we have explained in chapter number 3. So problem solving procedure में हमने क्या करना है? So first of all, as we explained earlier, first of all we have to make a sketch for each object separately. Sketch a pre-body diagram showing all the forces acting on that particular object. Then make the magnitude and directions as accurate as you can. Level each forces. मतलब ये चीज़ें आपने करनी है कि आपने स्केच ड्रा करना है, उस स्केच में प्री बॉडी डायग्राम्स आपने बनाना है, आपने जो मैग्नीट्यूड है फोर्सेस की और जो डायरेक्शन है उसको स्पेसिफाई करना है. फिर आपने क्या करना है? रिजोल्व वेक्टर एंड टू इट्स कंपोनेंट्स, वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, रिजोल्व करना है. Then apply Newton's second law separately to each object and for each vector components. हर चीज़ के लिए मतलब है कि हमने क्या करना है, न्यूटन सेकंड लॉ को अलग-अलग अप्लाई करना है. और फिर हमने अननोन्स क्वांटिटीज़ के लिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. बट बी रिमेंबर दैट दिस इज ऑफन रिक्वायर अलजबरा, कि मतलब हमें सोल्यूशन के लिए हमेशा अलजबरा की ज़रूरत पड़ती है, सच एज सोल्यूशन टू लीनियर इक्वेशंस एंड नंबर 2 अननोन्स, जिस तरह के हमारे पास मतलब बाकी इक्वेशंस है. पहला हमारे पास एग्जांपल है, जस्ट लाइक यू कैन सी हियर वी हैव टू पर्सन्स एंड बोथ ऑफ देम दे आर होल्डिंग, they are pushing the block in the at right angle to each other. The first one exerting a force that is F1 that is equal to 900 newtons, and the second he is exactly applying the same magnitude of force that is F2 is equal to uh, 100 newton as well. So both of these persons, they are perpendicular to each other. So how we have to find, the angle between them, uh, that they are perpendicular to each other. It's mean that we have to find out the solutions. So for the solutions, the resultant vector can easily be found by applying the Pythagorean theorems. So the Pythagorean theorems, as you know, that we have to take the square of first, then the square of the second force, and then the whole root of the whole quantity. जब हम लेंगे और इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास जो वैल्यूज दी गई है और इसका स्क्वायर रूट, पहले स्क्वायर लेंगे फिर इनको जमा करेंगे फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे, और तो हमारे पास जो वैल्यू निकल आएगी दैट्स विल बी इक्वल टू 141 न्यूटन्स. तो ये हमारे पास टोटल या रिजल्टेंट फोर्स है. डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यू नो दैट direction will be find out tangent theta is equal to f2 divided by f1. टेंजेंट थीटा बेसिकली एक रेशो है दोनों फोर्सेस के बीच, मतलब परपेंडिकुलर और बेस के बीच रेशो है. यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालेगा, उससे थीटा इज इक्वल टू 45. एग्जाम्पल नंबर 4.9. 4.9 में आपको दिखाया गया है कि वी हैव अ बोर्ड, और इस बोर्ड पे मतलब जो मुख्तलिफ फोर्सेस है दैट यू कैन सी हेयर, मतलब वो जो फोर्सेस है मुख्तलिफ फोर्सेस है. फर्स्ट फोर्सेस एफ ए दैट इज 40 न्यूटन्स. माई वन पर्सन इज होल्डिंग trying to pull it at a force that is equal to 40 न्यूटन्स. दूसरा बंदा इसको पुल कर रहा है, जो फोर्स इस पे अप्लाई कर रहा है पर्सन बी, दैट इज इक्वल टू 30 न्यूटन्स. मतलब दोनों बंदे इस बोर्ड को क्या कर रहे हैं,
खींच रहे हैं। पहले की जो डिग्री है ऑरिजिन के साथ 45 है, दूसरे की जो एंगल है दैट इज 37। सो व्हाट वी हैव टू डू, मतलब हमारे पास दो फोर्सेस है, सो दोनों फोर्सेस को हमने क्या करना है, इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। जो पर्सन ए है उस पर्सन ए को जो फोर्स अप्लाई करा दैट इज एफ ए, सो इस एफ ए को हमने क्या करना है, उसको वेक्टर कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है दैट इज एफ ए वाई हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। सिमिलर जो पर्सन बी है उसको भी हमने कंपोनेंट्स में वो डिवाइड करना है। सो एफ द बोर्ड्स मूव विद द एक्सेलरेशंस a, so then just by simplifying the Newton's law, जो resultant force हमारे पास है that is equal to ma, so the F resultant force that is equal to m ax, that is the accelerations along the x-axis. So the resultant force along the y-axis that is equal to m, that is mass time the vertical component of the accelerations. So that's how you can find that, you can find out the resultant force, and with that I mean you can find out the vertical component of the accelerations, and you can find out the horizontal components of the accelerations. I mean you can find out both the accelerations, but for that as I mentioned, first of all you have to resolve into the components, you have to find out the resultant vectors. So what actually you have to do for problem number 4, example number 4.9. So just we mentions that first of all illustrate the procedure for the Newton's second law problems. So what I have to do, we have to proceed like first of all sketch the situations, कि हमने situations के मुताबिक sketch खींचने हैं. So sketch a pre-body diagram for each body and problems and draw all the forces acting on it. फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि part of your grades an exam and quizzes that related with your problems, ठीक है. फिर हमने क्या करना है कि स्टेप 2 में resolve the forces on each body into the components, और इसके लिए आपने क्या करना है, you have to use a convenience choice of x y axis, then use the ruler for finding vector component from chapter number 3. Then step number 3 में आपने क्या करना है, you have to apply normals, you have to apply Newton's second law for each object separately, that is a summation of forces, that is net force equal to ma. Note that this is the last step, not the first step. I mean this step you have to apply I mean at the last, ठीक है, ये वाला step आपने आखिर में apply करना है. So we need a separate equations like this for each object. So resolve it into components, that is x components. So the summation of forces along the x-axis, so that produce the acceleration along the x-axis, that is max. Similarly, summation of the forces along the y-axis, that is m ay. So then we have conceptual examples, and that conceptual example is already there in full detail inside your books. और इसी conceptual example में आपने क्या करना है कि we have a body that is moving at a constant velocity, at a constant speed, with no fractions. So which pre-body diagram is correct? मतलब यहाँ पर हमारे पास तीन मुख्तलिफ किस्म के body diagram है. तो प्री बॉडी डायग्राम्स इनमें से कौन सा प्री बॉडी डायग्राम जो है वो करेक्ट है, मतलब एक बॉडी है वो मूव करे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ विद नो फ्रैक्शंस, ठीक है, उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है. सो विच प्री बॉडी डायग्राम इज करेक्ट, आपने अपने नॉलेज को यूटिलाइज करके ये बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है. So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you again in the next lecture. Till then, bye bye.